Good evening, students. Welcome to our YouTube classes, YouTube channel, CGB Mentors. I'm here to teach you agriculture and rural development subject specifically for your NABARD grade A exam. Am I audible? पहले तो ये बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है, ये ना हो कि मैं बोलता रह जाऊं और आपको मेरी आवाज़ भी ना. It's our third class of crop classification and it is last one. तो स्टार्टिंग से हम क्या पढ़े हैं, क्या किया है, उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे जो है आगे चलेंगे. एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन कि किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे इस जो है क्लास के अंदर जो है आ सकते हैं, जो भी हमने टॉपिक किया. बट फर्स्टली टेल मी, एम आई ऑडिबल? हाँ, इन आवर लास्ट क्लास, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं. In our last class, we are discussing the classification of crop. Classification of crop according to the uses. According to the uses के according क्या था? वो cereals हैं, millets हैं, legumes हैं. इनमें भी आगे classification थी. Legumes हैं, they are legume crops classified as legume crops. Commercial, oil seeds, fiber crop, fodder crop, and last one is green manuring. These all are the classification based on the uses. Classification of crops according to the uses. Next, according to the range of cultivation or according to the place of origin. In place of origin, we discuss there are two classification. First is native and second one is exotic. Example of exotic are potato, tobacco, sugarcane. And example of native crops are like mainly wheat, rice, all the legumes. Mostly all of the legumes are the native crop. And what are the native crop and what are the exotic crop? We already discussed in our last class. Next one is botanical classification. From botanical classification, we classify according to the what is the family of crop. फैमिली में हमने देखा था कि कौन सी फैमिली हो सकती है. पोएसी हो सकती है जिसको हम ग्रैमिनी बोलते हैं. लेग्यूमिनेसी हो सकती है जिसको हम पेपिलोनेसी बोलते हैं. एस्ट्रेसी हो सकती है and many more. After that, we classify crop according to the botany or according to the botanical classification. Also, are they monocotyledon or dicotyledon? What is monocotyledon and dicotyledon? We already discussed. Commercial classification, economical, and most important one is seasonal. We discussed seasonal classification, that is it a kharif crop, rabi crop or zaid crop. We classify crop based on the season in three ways: kharif season, rabi season और zaid season. In kharif season कौन कौन सी crop आती है? Paddy, rice, then millets, then soyabean, groundnut. उसके बाद all the millets, paddy, cotton are included in खरीफ सीजन. रबी में क्या आ जाएगा? wheat, mustard, third one is mainly gram, barley crop, oats, barley. These all crops are included in रबी. In जायद सीजन में कौन सी? जो short duration की crop है. The crops which require less time period for their proper growth are considered in dry season, mainly 60 to 70 days. For example, cash crop,
watermelon, cucumber, moong. These all crops are included in dry season. Next one is classification based on ontogeny. Ontogeny means it is a perennial, जो लंबे समय तक चलती रहती हैं. It is an annual, just survive for only one season. Third one is biennial. Survival of the crop for more than one season and less than 2 seasons, or mainly dies in 1 year. जो एक साल के अंदर जो है खत्म हो जाएगी, लाइक शुगर केन, शुगर बीट, टोमेटो आर एक्सेप्शन, टोमेटो. नेक्स्ट, we classify based on the cultural requirement, that is it is a arable crop or non-arable crop. It is grown on wetland, for example rice, jute, or it is grown on upland which require less amount of water. It is a arable crop or non-arable. Arable means which require preparatory tillage before the sowing. Which does not require preparatory tillage before the sowing of any kind of crops are classified as non-arable crop. So these all concepts were cleared in our last class. Next classification is on the basis of agronomical or economical aspect. On the basis of agronomical or economical aspect, that this crop is classified as food crop, vegetable crop, non-food crop और special purpose crop. अभी हम जो खाते हैं वो कौन सी है? Food purpose. We already discussed what are the cereal, what are the millets, what are the commercial crop, what are the sugar crop, what are the oilseed crops. So in that way, in food crops, mostly all the cereals and millets are included in food crops. In vegetable crops, there are some vegetable like cucumber, melons, potato, tomato, है ना, in which we use different part for our personal needs. Like some are the leafy vegetables. We consume leaf of that vegetable crop to fulfill our need, है ना. पत्ता गोभी खाते हैं, उसके पत्ते खा रहे हैं, किसी का हम फूल खा रहे हैं, किसी का फ्लावर खा रहे हैं, किसी का फ्रूट खा रहे हैं, तो उसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे. तो ये वेजिटेबल्स. नॉन फूड में all the fodder crops or all the green manuring crops are included in non-food. Then is special purpose crop. We will discuss in our next 5 to 10 minutes. We will discuss in nearly 5 to 10 minutes what are the special purpose crop, and in your exam it is the most important one. From your exam point of view, it is the most important one. Clear? First, what are the food crops? Food crops like cereals, for example paddy, wheat, maize, millets, bajra, ragi, sorghum, pulses, legumes, edible oilseed, groundnut, sesame, sunflower, mustard, safflower, और fruit crop. Fruit crop में mango, banana, sapota, guava, papaya, pear, grapes, citrus. If it is not visible, then you can write down. Clear? Now, is it visible? Clear? So mostly all the cereal crops, millets, pulses, legumes that are used for our food purposes, feed. So that is known as food crops. All the vegetable crops, if we use leaf to fulfill our need, then it is a leafy vegetable like cabbage, fenugreek, palak. Then if we use fruit of that vegetable crop to fulfill our need, then it is a fruit. We use fruit as a vegetable. If we use root, for example radish and carrot, just remember the one thing. In radish and carrot, we use root of radish and carrot. जो हम खा रहे हैं ना, गाजर और मूली खा रहे हैं, वो उसकी रूट होती है. जो उसके पत्ते तो नहीं खा रहे, पत्ते भी जो है खाए जाते हैं कई बार, पर हम जो उसके जो मूली के रेडिश के पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो भी कई बार खाए जाते हैं. बट जो हम ये रूट्स, ये रेडिश और कैरेट जो हम खा रहे हैं, मूली और गाजर, वो एक्चुअल में रूट्स हैं जिसको हम खा रहे हैं. बट इन केस ऑफ पोटैटो, पोटैटो भी जो है मिट्टी के अंदर लगती है, ये रेडिश और कैरेट भी मिट्टी के अंदर लगती है. इन पोटैटो वी यूज ट्यूबर और स्टेम. We use
tuber or stem. It is most important one. That in potato crop, the edible part of potato crop is tuber or stem. Clear? Potato, sweet potato, ginger or turmeric. And in onion and garlic, we consume bulb. Bulb means वो जो ऐसे करके बल्ब होती है ना, वो उसको बल्ब बोलते हैं, वो भी अंडरग्राउंड होती है, तो वो रूट नहीं है उसकी, वो क्या होती है, बल्ब है। और फ्लावर में हम, मैंने बताया कॉलीफ्लावर में उसका फ्लावर कंज्यूम करते हैं, और पोड में हम फ्रेंच बीन, पिजन पी, काउ पी, इंडियन बीन, इनके जो है पोड, जो लेग्यूम क्रॉप है, ये लेग्यूम क्रॉप है। लेग्यूम क्रॉप के क्या है, हम पोड यूज करते हैं। तो इन लेग्यूम क्रॉप वी यूज पोड। तो यहां पर भी पल्सिस थी। ये वो पल्सिस हैं, ये वो दालें हैं जिनको पकाने के बाद खाते हैं, जिनको कच्चा ही खा लिया जाता है, वो पोड में, उनके लिए पोड हम यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नॉन फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट वन इज नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप में फोरेज, फोडर, बरसीन कौन सी आ जाएगी? फोरेज क्रॉप, जिसमें हम पढ़ा बरसीम। सोरगम इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन forage crop, but it is also a food crop. It is used as food crop. So in forage crop we are only writing the non food crops. So sorghum is not included in this. Only the food crops, only the fodder crop that are only used for the fodder purposes, not for the feed purposes for human being, are considered as non food forage crops. Non food forage crops. Second one is fiber crop. Mostly all the fiber crops are considered in non-food crops, like jute, cotton, sun hemp. Sun hemp is a green manuring crop also. Non-edible oilseed, as I told you earlier, edible oilseed are classified as two ways. Like first one is edible oilseed and second one is non-edible. All the edible oilseed are included in food crops, but all the non-edible oilseed crops are included in non-food crops, like castor, लिनसीड, अलसी का तेल और अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल और लिनसीड। आफ्टर दैट शुगर क्रॉप, शुगर केन और शुगर बीट, इट रिक्वायर प्रोसेसिंग, so it is considered in non food crop. Dyes which provide color to us, that is dyes, and also considered non food crops, like safflower. Safflower is a non food crop and consumed as edible oil. If we produce dyes from the safflower crop, then it is a non food crop, but if we use as a edible oil, then it is a food crop. Next one is narcotics: tobacco, coffee, tea, opium, poppy. This one is chicory. What is chicory? Chicory we use in coffee. Chicory is actually a weed crop, unwanted plant होता है जिसको हम कॉफी में यूज करते हैं. Drugs, medicinal, isabgol, senna, kereatu, opium, poppy is also considered in drug and medicine crop. Okay, then spices and condiment: cardamom, cumin, black pepper, coriander. These all are considered in the non-food crop. All are considered in the non-food crops. Next one is special purpose crop. Most important one. Most important. Most important. On the basis of special purpose, there are some crops that are classified as under. First one is row crop. First one is row crop. The crop grown in rows, in proper pattern of rows. अगर कोई भी क्रॉप किसी रोज के अंदर, जैसे एक रो इसकी, एक रो इसकी, एक रो इसकी, एक रो इसकी, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रो क्रॉप्स. ग्रोन इन रो विद अ यूनिफॉर्म स्पेसिंग. स्पेसिंग मींस ये एक प्लांट इधर, एक प्लांट इधर, ये होता है प्लांट टू प्लांट. These are plant to plant distance, and this one is row to row distance. If row to row distances and plant to plant distance remain the same, and crops are grown in row by row in proper pattern, then it is considered in row crop. That is considered in row crop. Next one is pod crop.
Next one is sport. As the name suggested, certain fast growing crop work as sport. To sport, if one crop is grow, है ना, एक फसल को हमने लगाया है दूसरे फसल की स्पोर्ट करने के लिए. How to sport? That one is a vine crop, requires sport to grow on the other crop. So if we grow one crop to give sport to this vine crop to trail on that crop, then it is known as sport crop. Certain fast growing crop work as supporter to vine crops, for example, castor, cherry in battle vine, sorghum in cowpea. So these all crops are considered in sport crop. Sport crops are not vine crops. Those crops which we sow to support the vine crop are considered in sport crop. Next one is windbreak crop. Windbreak crop. Windbreak crops are those crops that are grown on the boundaries of the main crop. Suppose this is our main crop. It is our main crop. जहां पर विंड स्पीड ज्यादा होती है, जिस एरिया में विंड की स्पीड ज्यादा रहती है, वहां पर क्या होता है, मान लो हवा इधर से चल रही है, तो ये पूरी क्रॉप जो है ऐसे करके यहां पर लॉजिंग हो जाएगी, रुक जाएगी. टू रिड्यूस द विंड स्पीड, so we grow windbreak crops, because in that case wind is blowing from this direction, but our this field, ये जो एरिया है हमारा, ये जो है एरिया हमारा बच जाएगा हवा से, विंड से. तो इसको बोलते हैं हम लीवॉर्ड साइड, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड. तो यहां पर जब चलेगी, यहां पर एक पेड़ लगा दिए जाएंगे जो क्या करेंगे, विंड ब्रेक क्रॉप्स होंगे. विंड ब्रेक क्रॉप्स आर दोस क्रॉप व्हिच आर ग्रोन ऑन द बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट द फील्ड क्रॉप फ्रॉम द विंड. ये एक लंबी सी ऐसी लंबी बड़ी फसलें होंगी, जब ये हवा यहां से आ रही है तो हवा यहां से इसको काट के नहीं जाएगी. द विंड डज नॉट क्रॉस फ्रॉम दिस प्लांट एंड चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. जब तक ये नीचे आएगी तब तक हमारा फील्ड जो है वो यहाँ पर सेफ हो जाएगा, वहां पर जो है हवा इसको क्रॉप को नहीं लगेगी. ये वहां पर किया जाता है जहां पर विंड की स्पीड ज्यादा होती है, हवा बहुत तेजी से चलती है, विंड स्पीड इज हायर. क्लियर? So we use windbreak crops where the wind speed is higher and greater than 10 km per hour. The wind speed is greater than 10 km per hour. We use windbreak crops. Then is cover crop. As the name suggested, cover. किसको कवर करना है? मिट्टी को, सोइल को कवर करना है. To cover the soil, surface or ground. The crops which are grown to cover the soil or cover the ground to reduce the erosion, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, उसको हम बोलते हैं कवर क्रॉप. Like cover crops are grown primarily to cover the soil and to reduce the loss of moisture and erosion by wind and water. These cover crops are fast growing crops and having strong root system. If they have strong root system, तभी तो वो कवर कर पा रही है ना, मिट्टी को ऐसे करके कवर कर रही है कि मिट्टी का इरोजन जो है वो ना हो पाए. क्लियर? दैट इज कवर क्रॉप. नेक्स्ट वन इज silage crop. Crop that which are preserved in the succulent condition by partial fermentation in tight silo pit, for example में. Just simple thing. घर पे अचार खाते हो, पिकल खाते हो. मान लो आप खा रहे हो आम का अचार, है ना, आम का अचार, मैंगो पिकल. इन मैंगो पिकल हम क्या करते हैं,
कट करते हैं, कट किसको करते हैं, मैंगो को कट करते हैं, वो सकुलेंट होता है, वो कच्चा आम होता है, ध्यान रखना, वो क्या होता है, सकुलेंट होता है, कच्चा आम होता है, जिसको हम क्या है ट्रीट कर देते हैं, किसके साथ, ऑयल के साथ, स्पाइसेस के साथ एंड बहुत सारे मसालों के साथ, टू इंक्रीज इज शेल्फ लाइफ, ये खराब ना हो। उसी को लिए अगर हम किसी भी फोडर क्रॉप को, इफ वी यूज फोडर क्रॉप एज अ पिकल फॉर द एनिमल, फॉर लाइवस्टॉक पर्पसेस, क्रॉप विच आर प्रिजर्व्ड इन द सकुलेंट कंडीशन बाय पार्शियल फर्मेंटेशन, उस पर थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, एक ऐसे करके पिट बनाकर, गड्ढा खोदकर, पिट के अंदर ये हमने भर दिया सकुलेंट क्रॉप, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। आफ्टर दैट प्रॉपर फर्मेंटेशन और पार्शियल फर्मेंटेशन, वी टेक दैट साइलेज आफ्टर 3 to 4 months, then it is known as silage, and the crop grown for this purpose for silage making is known as silage crops, उसको क्या कहते हैं, साइलेज क्रॉप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, साइलेज क्रॉप। देन इट इज ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ये हम कर चुके हैं, पास्चर क्रॉप ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज कैच क्रॉप, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज कैच क्रॉप। फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। See, as I told you in our last session, there are 3 seasons: Kharif, Rabi, and Zaid. Suppose in Kharif season, we grow cotton, and sowing time of cotton is before 15 May. We grow cotton crop before 15 May. It is the optimum time for growing cotton crop or sowing of cotton crop. And in cotton crop, mostly there is one pest named pink bollworm. Or pink bollworm attack on the crop on 10 September. And सारी जो हमारी क्रॉप है वो खराब होगी, सारी क्रॉप जो है हमारी खराब होगी। बट इन रबी सीजन वी वांट टू ग्रो wheat. ऑप्टिमम टाइम फॉर wheat sowing is, सबसे बढ़िया टाइम जो है wheat की सोइंग का वो है 10 to 25. Let me explain. हाँ जी पूरी यूट्यूब पर पूरी रिवीजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्लियर? देखो अब क्या है, हमने एक क्रॉप लगाई, वो क्रॉप होगी डैमेज, हमने रबी में एक क्रॉप लगानी है, बट वी हैव दिस टाइम पीरियड, वी हैव टाइम पीरियड ऑफ September to November. If we catch this season, if we catch this season by some crop having tendency of short duration, जिसकी टेंडेंसी है कि वो थोड़े दिनों में जल्दी से ग्रो कर जाएगी, तो उस सीजन में हम, मतलब हमारे पास जो है अक्टूबर नवंबर, मतलब 2 months हमारे पास बचते हैं। इन 2 months इफ वी ग्रो पोटैटो और मस्टर्ड, मस्टर्ड में भी सिर्फ तोरिया, in mustard if we grow species of mustard toria, then we harvest in the month of November, and in November we will grow rabi season crop, हम उसमें जो है अपनी wheat लगा लेंगे, उसमें जो है अपनी wheat crop जो है उसको लगा लेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्या किया, हमने उस सीजन को वी कैच दिस सीजन, जो बचा हुआ टाइम था, जो बचा हुआ सीजन था, जो हमारी फसल खराब हो गई थी, उसको हमने क्या किया, कैच किया। फर्स्ट पॉइंट इज, सपोज इफ वी ग्रो इन खरीफ सीजन पैडी, इफ वी ग्रो पैडी इन आवर खरीफ सीजन, देन and if we grow short duration variety which harvested in the month of September, and then we have remaining time of 2 months
time or this season is also known as catch season, or if we grow some crop in that season or in that time of 2 months, it is known as catch crop. Just remember the one thing, dry season is a season, means if we grow, देखो, if we grow crop in month of May to June, then it is a kharif crop. Then it is a kharif crop. But if we grow crop on the month of October, November, then it is a rabi crop. If we sow crop in month of March, April, then it is a dry season crop. But tell me one thing, in Punjab, there is a pattern like paddy, potato, wheat, moong in 1 year. In area of Jalandhar, Amritsar, in area of Jalandhar, Amritsar, they take 4 crops, but we have only 3 seasons. That is Kharif, Rabi and Zaid. That is Kharif, that is Rabi, and that is Zaid. Then what is that? This is a catch crop. We catch that time or that season to grow our next crop. This crop is known as catch crop. For example, green gram, sesame, cowpea are the main example. And sesame is mostly used as a catch crop. Clear? If there is any doubt till now, then you can ask me. Next question. Oh, sorry. Next classification, that is trap crop. Trap means फसाना, जाल, जाल में फसाना. See, we have a field of 2 acres. In that area, we grow crop like cotton. But in cotton crop, there is one insect, called white fly, which suck the sap from the leaves of the cotton crop and reduce the yield nearly 80 to 90%. Has the ability to reduce the yield nearly 90 to 100%. So, to reduce the effect of white fly on the surrounding, we grow okra. As I said in our last class, that family of okra and cotton is same, Malvaceae. So, white fly loves okra more than cotton. White fly loves okra more than cotton. So, white fly attack more on the okra crop, but our cotton crop, main crop, which is our main crop, protected by the white fly. Protected by the white fly. The crop used to trap these insects are known as trap crop. Like in tomato crop, there is attack of root node nematode. Root node nematode. To reduce this effect, we grow marigold. Or to reduce the attack in tomato crop of thrips. Thrips is an insect. If we want to reduce the effect of thrips on our tomato crop, then we also use marigold as a trap crop to trap the insect or pest. To trap the insect or pest. That is known as trap crop. Crop which is grown on the boundary of field for protection against pest, insect, disease. For example, marigold for thrips in tomato crop. Next one is nurse crop. Nurse. What is nurse? Which nourish. Nurse means which nourish. If one crop nourish the other crop, means to say if one crop give nutrients to the another crop,
This crop which are providing nutrients to the other crop is known as nurse crop. Like in hospital, नर्स क्या करती है, हमें ट्रीटमेंट देती है, नरिश करती है. सो सेम nurse crops are that crop which nourish the main crop. Mostly legume crop, because legume crop, as I told you in our previous session, that legume crop have ability of nitrogen fixation by mean of nodule formation with the help of rhizobium bacteria. With the help of rhizobium bacteria. So legume crop provide nitrogen or nourish the main crop for their growth. So this is all about nurse crop. Companion. What is the meaning of companion? As the name suggested, companion crops are those crops that are grown simultaneously. Benefited to each other. दोस्त, मुझे 10 रुपए चाहिए, आज आप मांगोगे, अगले दिन वो भी 10 रुपए मांगेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी. तो वो क्या है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है. Two crops are taken together with the aim that they are benefited to each other. For example, maize and green gram. Then it is mixed crop. Two or more than two crops are mixed together and sow together on the same piece of land is known as mixed crop. मिक्स क्रॉप में अलग अलग टाइप है. एक तो होता है रोज की मिक्सिंग करना, मतलब 2 रोज किसी की, 3 रोज किसी की. एक होता है एक सीड लिए बरसीम के, एक लिए मस्टर्ड के. we mix it together, after that we broadcast the seed on our field after mixing of seed, then it is known as mixed crop. For example, bajra plus cowpea or green gram. In that case, we mix the seed of bajra, cowpea or green gram together and broadcast on the field. That is mainly used for our fodder purposes for livestock, for fodder production. Clear? You can write down. If there is any doubt till now, you can ask me. You have 1 to 2 minutes. You can ask me. After that, we will continue our class. समझ आ रही है? अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को या नहीं कर रहे? ओके. इसके बाद एमसीक्यूज भी हैं, वहां से पता चलेगा कि आपने पढ़ा क्या. क्लियर? Next classification is based on the climate condition. First one is tropical crop. Tropical means tropical season. Tropical means hot and humid. The crops require hot and humid climate for their growth are classified as a tropical crop. So most of the countries are we classified as it is a tropical country, it is a temperate country, it is a subtropical country. India is basically a mixture of tropical and subtropical. Clear? So in tropical crop, the crop which require a hot and humid climate means to say on an average temperature above 80 degree Celsius होना चाहिए. The crops require more than 18 degree Celsius temperature for their entire life cycle. Then this crop is classified as tropical crop. For example, maize, sorghum, coconut. Coconut is a proper example of tropical. Maize, sorghum, coconut, sugarcane, ganna. These all crops are classified as tropical or tropical season crop. Next one is subtropical crop. The crop, but before subtropical, we will discuss temperate crop. What is temperate? Temperate means cold.
those crops which require low temperature for their growth and development can tolerate low temperature of frost. For example, wheat, barley, apple, peach, pear, plum, all are the example of temperate. जो फसल, जो क्रॉप जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड, इंडिया के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड ज्यादा हो रही है, उस क्रॉप को हम बोलते हैं टेम्परेट. रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर for the growth and development is known as temperate. And the crops in between tropical and temperate, which neither require high temperature nor require low temperature, are classified as subtropical crop. Mean to say, temperature do not drop below -5 degrees Celsius and not above the 35 degrees Celsius, are classified as subtropical crop. They are typically found in regions that experience some frost, but where temperature do not drop -5 degrees Celsius. Examples are rice. Examples is rice. Clear? Moving forward, next one is on the basis of photoperiod. On the basis of photoperiod. On the basis of photoperiod. What is photoperiod? Photoperiod is a photo, as the name suggests, photo period. Photo mean light, period mean duration. There is one more term, that is phototropism. Phototropism. Photo mean light, tropism mean direction. किस फसल को, किसी क्रॉप को कितनी ड्यूरेशन की लाइट चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? फोटो पीरियड या फोटोपीरियोडिज्म. Requirement of light for the crop, not in the vegetative stage, but for the flowering purpose. That is most important one, for the flowering. Suppose, as I said, Kharif season. In Kharif season temperature, in right now it is a Kharif season. In Kharif season temperature जो है वो 40-45 डिग्री तक भी चला जाता है. बट मोस्टली खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, ठीक है, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सभी क्या हैं? ये क्या है? फोटो पीरियड जो है 3 तरह का होता है, ठीक है. शॉर्ट देखो राइस. बट जब हम राइस लगाते हैं तो तब ये क्या है? ये छोटे प्लांट तो नहीं है, तब तो दिन जो है लंबे होते हैं. बट इसमें क्या है, जब फ्लावरिंग आती है उसके अकॉर्डिंग हम देखना है कैसे, जैसे जो दिन है, जो डे लेंथ है, एज द लेंथ ऑफ द डे इज गेटिंग लेस 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 लेस, देन फ्लावरिंग जो है उतनी ज्यादा होती रहेगी. मतलब जब हमारे क्या है, मोस्टली खरीफ क्रॉप आर कंसीडर एज शॉर्ट डे प्लांट, बट इन खरीफ सीजन दिन लंबे होते हैं, बट फिर भी इसको शॉर्ट डे में क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि उनको फ्लावरिंग, उस क्रॉप को फ्लावरिंग तब आती है जब दिन छोटे होने शुरू होते हैं. तो इन शॉर्ट डे प्लांट क्रॉप रिक्वायर लेस देन 10 आवर्स फॉर द फ्लावरिंग. मतलब एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा का दिन नहीं होना चाहिए, बड़ा दिन. तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट डे, मीडियम डे और लॉन्ग डे. देन इज लॉन्ग डे. मोस्टली जो रबी सीजन क्रॉप हैं वो लॉन्ग डे प्लांट हैं या लॉन्ग डे क्रॉप हैं, बिकॉज
रबी में वैसे दिन छोटे होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, बट फ्लावरिंग उनको कब आती है? जैसे वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ऑल आर द रबी सीजन क्रॉप, बट फ्लावरिंग कब आएगी? जब दिन जो है लंबे होने शुरू होंगे, मतलब इट रिक्वायर मोर देन 12 आवर डे इन वन डे, it require 10 hour minimum, 10 hour light in one day. In 24 hours it requires more than 12 hour light for flowering. तो सारी प्रोडक्शन किसी भी क्रॉप की फ्लावरिंग पे डिपेंड करती है। तो फ्लावरिंग इसको कब आएगी? जब इसके दिन जो हैं वो लंबे होने शुरू होंगे। तो एक और है, एक है डे न्यूट्रल। सम क्रॉप रिक्वायर नेदर लॉन्ग डे नॉर शॉर्ट डे। अगर उसमें दिन 6 घंटे का है तो भी, अगर लाइट जो है 6 घंटे की है तो भी उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। एल्स सनफ्लावर, कॉटन, अगर दिन बड़े हैं तो भी फ्लावरिंग आ जाएगी, दिन छोटे हैं तो भी फ्लावरिंग आ जाएगी, उसको मैटर नहीं करता। तो दीज क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन डे न्यूट्रल क्रॉप। बट देयर इज अ वन एग्जांपल ऑफ sugarcane is neither a day neutral nor a long day nor a short day. Sugarcane is a intermediate short day. Intermediate, most important example, intermediate short day plant. Intermediate short day plant because it requires 10 to 12 hours of daylight in 24 hours. For flowering in sugarcane, sugarcane crop requires 10 to 12 hours in 24 hours of. Clear? That's all about long day plant, short day plant, and day neutral and intermediate short day plant. And then what is phototropism? The direction of crop or direction of flower towards the light. For example, sunflower. For example, sunfloवर। आपने देखा होगा सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो जैसे जैसे धूप इधर होती जाती वैसे वैसे जो है उसी की द्वारा जो है डायरेक्शन चेंज करता रहता है। That process is known as phototropism. That process is known as phototropism. So sunflower is an example of phototropism. Rice is an example of short day plant. Wheat, barley, mustard is an example of long day plant. Sugarcane is an example of intermediate short day plant. Now you can write down. Long day plants are those plants require long duration of sunlight, maximum 12 hours of sunlight required for reproductive stage. Reproductive means flowering stage. Example, wheat, barley, oat, etc. Short day plant require day length of less than 10 hours for their reproductive growth. For example, rice, sorghum, maize. These all are kharif crop. These all are rabi crop. Day neutral plant. The plant do not require either long day or short day for the growth and development. That is considered in day neutral plant. Examples are cotton, which is a kharif season. Sunflower also is a kharif season. Clear? बहुत easy, बहुत easy. Next one is based on the growth habit. Based on the growth habit. Based on the growth habit. See, in plants, mainly there are 4 stages. Mainly germination, vegetative, reproductive, then is maturity. In germination stage, seed germinate, in radicle roots emerge, and in plumule shoot emerge. We will discuss in our seed science topic germination. In vegetative stage, proper plant growth जो है वो occur होगी, proper plant growth. In reproductive stage, फ्लावर जो है वो आएंगे, फ्लावर. In maturity,
जब वो मैच्योर हो जाएगा, पकने के लायक हो जाएगा, तो ये जो 4 स्टेजेस हैं। बट इन सम केसेस, इन सम क्रॉप्स, इट इज ऑब्जर्व दैट कि वो अपना वेजिटेटिव भी ग्रो करेगा। सिंपल सी एग्जांपल, यू आर वाचिंग दिस क्लास, according to me, you are preparing for NABARD grade A exam. Also it is an important class for all the agriculture exams, but right now you are watching for the purpose of NABARD grade A. अगर आप ये सोचो कि आप NABARD ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हो, साथ में आप RBI भी कर लो, साथ में आप AFO भी कर लो, साथ में आप IBPS भी कर लो, तो यू आर नॉट डिटर्मिनेंट, यू आर नॉट अ डिटर्मिनेंट। वैसा ही सेम, दैट मीन यू आर नॉट डिटर्मिनेंट। और अगर आप सिर्फ NABARD की तैयारी कर रहे हो, देन यू आर अ डिटर्मिनेंट टुवर्ड्स NABARD। वैसा ही सेम है, इफ क्रॉप is in vegetative stage, stay in vegetative stage. After that, जब वो रिप्रोडक्टिव पे आएगा, तब उसकी वेजिटेटिव जो है ग्रोथ जो है रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक क्रॉप है वो ऐसे बढ़ रही है, जब तक उसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब वो वेजिटेटिव पे है, जब तक उसकी ग्रोथ हो रही है तब तक उसमें फ्लावर नहीं आएंगे, तो वो डिटर्मिनेंट है अपनी ग्रोथ को लेकर। उसकी इतनी ग्रोथ होनी थी, ग्रोथ होगी, आफ्टर दैट ग्रोथ उसमें फूल आएंगे, लाइक राइस, पैडी, सॉरी wheat, क्लियर। So these are the example of determinant, because इन क्रॉप्स के अंदर डिटर्मिनेशन है कि पहले वेजिटेटिव ग्रो करना है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पे जाएंगे, वो स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। इन लाइक इन मस्टर्ड, मस्टर्ड की क्रॉप इतनी सी होती है, सिर्फ इतनी सी, उसमें फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, साथ में इसकी हाइट बढ़ रही होती है, साथ में फ्लावरिंग आ रही होती है। तो दीज आर नॉन डिटर्मिनेंट। हाँ, write down determinate crop plant which initiate their reproductive growth after the completing of vegetative growth. For example, wheat, barley and rice. Wheat, barley and rice. Indeterminate plants are plants whose vegetative and reproductive stages continue simultaneously. जिनकी जो है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज साइमल्टेनियसली चलती ही रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट और नॉन डिटर्मिनेट प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, टोमेटो, cucumber, watermelon, soybean, mustard and many more, क्लियर। जब किसी भी क्रॉप के अंदर सिर्फ वेजिटेटिव ग्रो करेगा, जितना ग्रो करना कर गया, अब इसके बाद फूल आएंगे इसको। बट इन इनडिटर्मिनेट वो भी ग्रो कर रहा है, साथ में फूल भी आ रहे हैं उसको, दैट इज इनडिटर्मिनेट। Based on mode of pollination, based on mode of pollination. Next classification is based on mode of pollination. Before this, we need to understand the floral parts. In flower, there are 4 major parts, that is stamen, pistil, petals and sepals. Means to say, calyx, group of sepals is known as calyx corolla. Clear? These are the main 4 parts of flower. Stamen means anther and filament. Male part is known as stamen. Female part is pistil. So, if male part of one flower mate on the female part of the same flower, that is known as सेल्फ पोलिनेशन। उसी मतलब एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये मेल पार्ट है, उसी के अंदर फीमेल पार्ट है, इसका ये जो एंथर है इसी फूल के अंदर आके गिर गया। बिकॉज सीड कब प्रोड्यूस होता है? सीड प्रोडक्शन, सीड कब प्रोड्यूस होता है? जब वो उसके अंदर जो है मेल और फीमेल आपस में मेट करते हैं, तब वो सीड प्रोड्यूस होता है।
सीड उसके बिना भी हो जाते हैं, पार्थिनोकार्प इफेक्ट है वो आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, मोस्टली जो सीड है वो तभी बनते हैं जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं। और वो जो है, अगर इन वन फ्लावर देयर इज अ वन मेल पार्ट and inside this there is a female part, that is stigma, style, ovary and ovule. Anther of that flower, anther means this one, anther of that flower by mean of wind, by mean of insect or by mean of क्लिस्ट्रोगैमी, चैज्मोगैमी, मतलब ये फूल बंद ही रहे, एंथर जो है इसके अंदर चला जाए, ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर, तो उसी फूल के अंदर जो है पोलिनेशन होगी, that is self pollination. But if anther of one flower that is stigma, anther of one flower दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके ओवरी के अंदर जाएगा, मतलब दूसरे स्टिग्मा को फर्टाइल करेगा, तो तब क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। तब क्या है, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन प्लांट और ऑटोगैमी। एग्जांपल्स आर राइस, व्हीट, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड सोयाबीन। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ सेम फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, that is known as self pollinated crop. Cross pollinated door crop, transfer of pollen from anther of one flower to stigma of another flower of the same plant or different plant. एक प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं दो अलग अलग फूल जिसमें एंथर और स्टिग्मा जा रहे हैं, और अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं, दैट इज मेज, बाजरा, सनफ्लावर एंड ब्रासिका आर द एग्जांपल ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड, एग्जांपल ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड। Next one is based on mode of propagation. As I said earlier, sexually propagated means जहां पर मेल और फीमेल मेट करके आपस में क्या है, सीड को प्रोड्यूस करेंगे। So the crops propagated by mean of seed are classified as sexually propagated crop plant. For example, rice, wheat, green gram, black gram, soybean, maize and barley. Mostly field crops are sexually propagated plants. Then asexually propagated plants are those plants which require specialized part or cutting, grafting or layering. For example, sugarcane, ginger and potato. In sugarcane, ये जो sugarcane होता है इसमें हम सीड नहीं लगाते, इसमें क्या है, इसका ये पोर्शन कट कर लिया, अब यहां से क्या है, नया जो है शुगर केन आ जाएगा, तो मतलब इसमें हमने सीड नहीं लिया, उसी का वेजिटेटिव पार्ट लिया है, तो ये क्या है, एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड। सेक्सुअली में क्या आ गया, ऐसे जो है सीड के थ्रू हम जो है जिसकी प्रोपोगेशन करते हैं, जिसमें सीड लगाते हैं, वो क्या है, व्हीट, राइस, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, मेज एंड बार्ली। क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन। मोड ऑफ रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट वन, ये हम जो है हम क्रॉप फिजियोलॉजी में और अच्छे से करेंगे, सिर्फ एक बार थोड़ा सा समझ लो। क्रॉप नीड some carbon atoms for the reproduction or for the respiration. Crop require carbon atoms for the respiration. If it required 3 atoms of carbon for the respiration, then it is known as C3 plant. For example, you need to remember the examples of this, that is wheat, oat, rice, soybean or cotton. Crop which require 4 atoms of carbon molecule is known as C4 plant. For example, sugarcane, maize and sorghum. These all crops require 4 atoms of carbon, so that's why these crops are included in exhaustive crop, because it takes 4 atoms of carbon. These are more exhaustive crop, ये ज्यादा मिट्टी को खराब करेंगे than C3 plants. Then C3 plants. इसके अलावा
कुछ होते हैं कैम प्लांट्स, क्रोसुलेशन एसिडिक मेटाबॉलिज्म पाथवे, जिसमें पाथवे जो है ये कैम पाथवे फॉलो किया जाता है। इसमें होता है कि दिन में स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहता है, स्टोमेटा इज बीइंग क्लोज इन डे टाइम एंड ओपन एट नाइट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, कैम प्लांट। फॉर एग्जांपल पाइन एप्पल और prickly pear, pineapple are the most important example of कैम प्लांट। Clear? Most important example of the CAM plants. That's all about your classification of अब जो है हम इसके कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? और जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसे चल। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following crop is an example of dicotyledon? Which of the following crop is an example of dicotyledon? Rice, maize, wheat, cotton, sorghum. What is monocotyledon and dicotyledon? Monocotyledon means single cotyledon. In dicotyledon there is a two cotyledon. In monocotyledon venation on the leaves is parallel. Dicotyledon it is the leaves are broad and venation is net type. Rice is a monocotyledon. Maize is a mostly grasses, cereal, pulses are monocotyledon. Grasses and cereal are millets and grasses are monocotyledon. Wheat is also considered monocotyledon. Cotton is dicotyledon. भाई साथ में आंसर करते रहो। Sorghum is monocotyledon. So our correct answer is D, cotton. D, cotton is our correct answer. Clear? Next one. Which crop is classified as CAM plant? बहुत easy, अभी किया हमने ये, आंसर कर दो अभी। कौन सी क्रॉप इसमें कैम प्लांट है? व्हीट इज क्लासिफाइड एज C3 प्लांट, शुगर कैन इज क्लासिफाइड एज C4 प्लांट, मेज इज क्लासिफाइड एज C4 प्लांट, पोटैटो इज क्लासिफाइड एज C3 प्लांट, पाइनएप्पल इज क्लासिफाइड एज कैम प्लांट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट, C कैम प्लांट, pineapple is classified as CAM plant. Clear? So C is our right answer. Next, which of the following is a non-edible oilseed crop? Which of the following is a non-edible oilseed crop? We classified oilseed crops in two ways. That is edible, non-edible. In edible there is a mustard, soybean, sunflower, safflower, groundnut, in non-edible that is cotton, castor, neem, so correct answer is mustard, soybean, safflower is edible, groundnut is also edible, so correct answer is castor is a non-edible oilseed crop. So D is the right answer. Which crop is grown on lowland and tolerate water stagnation? Which crop is grown on lowland and tolerates water stagnation? We classify the crop based on the land, that is upland and lowland. On upland that is maize, potato, sorghum. In lowland paddy, jute, paragrass.
maize is upland, sorghum is upland, cotton is upland, rice is lowland. The correct answer is rice, sesame is lowland. So the correct answer is rice, grown on lowland and tolerate water stagnation. Rice उसकी water stagnation condition में ही अच्छा होता है, because in rice field rice does not require large amount of water, it require water frequently, बार बार पानी चाहिए उसको. So that's why we do puddling on the field to make a impermeable layer, कि पानी इनफिल्ट्रेट जो है नीचे जल्दी से ना जा पाए. उसके बाद मतलब ये क्या है, मिट्टी और पानी को आपस में मिक्स कर देते हैं, यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से पानी जो है नीचे नहीं जा पाता और जिसकी वजह से पानी जो है यहाँ पर खड़ा रहता है, वाटर स्टैग्नेशन होती है. तो राइस जो है इज एक्टा. व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इनडिटर्मिनेट प्लांट? Based on the growth habit, there is two type of crop, that is determinate and indeterminate. What is indeterminate? Complete vegetative growth before flowering. ये तो determinate है. Only vegetative stage exists? No. Only reproductive stage exists? No. Vegetative and reproductive stages occur simultaneously. When vegetative and reproductive stages occur simultaneously, these growth habit is known as indeterminate plant. But if vegetative growth complete before flowering, then it is known as determinate plant. So in indeterminate plant, our D option is a correct definition of indeterminate plant. So D is our right answer. D is our right answer. Moving next. Which of the following is a legume fodder crop? Which of the following is a legume fodder crop? Oats, napier, maize, lucerne or barley. Oats is a cereal crop. Napier, maize is a cereal crop. Lucerne having family Leguminaceae. Barley having family, barley is a cereal crop. So Leguminaceae family, so or lucerne, berseem are the example of legume fodder. Are the example, berseem and lucerne are the example of legume fodders. Right. Or in cereal fodder, oats, napier, barley, maize, sorghum are the example of cereal fodder. Clear? Moving next. What is the correct classification of cotton based on the fiber type? What is the correct classification? We classify the fiber on three bases, that is root, stem fiber and leaf fiber. In leaf fiber, examples are sisal and pineapple. In stem fiber, jute, mesta, sunhemp are the example of stem fiber. In fruit fiber, cotton is the example of fruit fiber. So cotton classified on the basis of fiber type is fruit fiber. So cotton is basically a fruit fiber. It is obtained from the fruit of the cotton crop. Clear? Next. Which of these crop is tolerant to saline soil condition? Citrus, wheat, rice, potato, chilies. Saline soil are those soil having pH 7 to 8.5. Potato, chili, rice. Rice can tolerate acidic soil, acidic condition and alkaline condition. What is alkaline? If the pH is greater than 8.5. If the pH is less than 7, then it is acidic condition. So rice is not in saline soil tolerant crop. But chilies are the example of saline soil tolerant. So E is our right answer. Next, which crop is best suited for cultivation in clay loam soil? Which crop is best suited for cultivation in clay loam soil? In sandy soil, crop which require less amount of water like millets
are the suitable for the sandy soil. In loamy soil, mostly all crops. In clay loam soil, mostly crop which can tolerate water stagnation or require more amount of water or water logging and loves water logging condition are best suitable for the clay loam soil, that is rice. Because maize, sorghum, onion, carrot, these can grow well in loamy, or sorghum can also grow in sandy soil. But rice can grow on and mostly and giving higher production and higher yield in clay loam soil. So rice is our correct answer. Next question is, which of the following crop is categorized as catch crop? As I told you earlier, as I explained you earlier, what is catch crop? So which of the following crop is categorized? इसमें से कौन सी crop को categorize करते हैं हम catch crop? So catch crop basically is a short duration crop. So you can answer this question in comment box. Comment box में answer बताना. Comment your answer. Do like, share and subscribe. And tell your answer in comment box, and also how's the class, how's the जोश. अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप कमेंट करोगे तो ये क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी. If you like the class, hope you like the class. Stay tuned with us. Thank you so much. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत. इसका आंसर